Hello everyone, I am starting with part 3 of absorption by roots, and today we will be starting with uses of turgidity. I hope you all are aware what is plasmolysis, flaccidity and turgidity. I have covered all 3 topics in the previous videos. So if you haven't watched those videos yet, please go back and watch part 1 and part 2 of absorption by roots before coming to part 3. Now let's move to the topic straight, which is uses of turgidity. So the first use of turgidity is provide rigidity to the soft parts of the plant. So what are soft parts of the plant? Like leaves. Leaves are the soft part. And how is turgidity developed? Turgidity is the stretched state of the cell. When cell is completely stretched. And when will cell become stretched? When water will enter inside the cell. So turgidity is the stretched state of the cell because of entry of water inside the cell. I'll give you an example. Let's take example of a balloon. When water is filled inside the balloon, what happens to balloon? Balloon becomes tight. Similarly, when water is entered in soft parts of the plant, what happens to soft parts of the plant? They become tight. They become rigid. So turgidity provides rigidity to soft parts of the plant. The first use. There's an application based question from this use, which is some plants wilt during hot afternoon. So if you have not done transpiration yet, the same question will come in transpiration chapter as well, and you'll understand the answer better in that chapter. For now, all those who have covered transpiration chapter, I'll tell you the answer quickly. So why do you think some plants wilt during hot afternoon? Hot afternoon, pick up the keyword in the question, hot afternoon. अगर hot afternoon है तो temperature will be very high, intensity of sunlight will be more. अगर intensity of sunlight ज़्यादा है, temperature ज़्यादा है, तो do you think plant will lose more water in the form of water vapor? Yes. And what is this process called? Transpiration. So hot afternoon में rate of transpiration exceeds rate of absorption. तो plant जितना पानी absorb कर रहा है soil से, उससे ज़्यादा plant lose कर रहा है in the form of water vapor by transpiration. इसीलिए leaves में enough water absent होने की वजह से what happens to the leaves? They wilt. Wilt का मतलब क्या होता है? Leaves droop down. Is this clear? Now moving to the second use of turgidity. Turgor pressure helps to push through hard ground as in seedling and mushroom. तो seed कहाँ present है? Soil के नीचे seed present है. अब क्या होगा? Seed के अंदर पानी enter करेगा. जैसे ही seed के अंदर पानी enter करेगा, water is entering inside the seed. Seed will become turgid. Seed stretch करेगा, expand करेगा, seed will become turgid. और कौन सा pressure develop हो रहा है seed के अंदर because of this entry of water? Turgor pressure. Now this turgor pressure will push through many layers of soil and finally seedling will come out in the air. So turgor pressure helps to push through many layers of soil and finally seedling come out in the air. Is this clear? Now there's an application based question under this use as well. So sometimes roots of certain trees have been seen to crack the walls of an adjoining building. क्योंकि क्या कर रहे हैं roots? Roots are absorbing water. Root cells are becoming stretched. They are expanding. और कौन सा pressure build हो रहा है उनके अंदर? Turgor pressure. और इसी turgor pressure की वजह से कभी कभी अगर साइड में कोई बिल्डिंग है तो उस पर भी pressure develop करेंगे और there can be cracks in the adjoining walls. So what's the answer for this question? Sometimes roots of certain trees have been seen to crack the walls of an adjoining building. It happens because of turgor pressure. Now coming to the third use of turgidity, which is turgor in root cells builds up the root pressure. तो turgor pressure की वजह से root pressure भी develop होता है. Now coming to the question, what is root pressure? नाम से पता चल रहा है root pressure. कहाँ पे develop होगा root pressure? Root cells में. So what happens in root cells? So let's take an example. A tree, roots, these are the root cells and soil. So now what will happen? Water from the soil will continuously enter into the root cells. Why do you think water from the soil is entering into the root cells? Osmosis. What was the definition of osmosis? Water molecules move from their high concentration to their low concentration through semi-permeable membrane. अब पानी की concentration ज़्यादा कहाँ है? Soil में.
पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम कहाँ है? रूट सेल्स में. एंड वाटर मॉलिक्यूल्स हैव द टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लो कॉन्सेंट्रेशन. तो ऑस्मोसिस की वजह से कंटिन्यूसली रूट सेल्स में पानी एंटर कर रहा है और इस पानी की वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा है सेल के अंदर. एंड दिस प्रेशर विल पुश वाटर एंड मिनरल अपवर्ड्स इन द प्लांट. अब इसमें भी प्रेशर डेवलप होने लग गया. It will again push water and mineral upwards in the plant. So the pressure which is developed in the root cells because of continuous entry of water molecules pushes water and mineral upwards in the plant to the stem. So pushing water and mineral upwards has a term. What is the term? Ascent of sap. What is sap? Water and mineral. What is ascent? Moving upwards. So I will repeat it again. These are the root cells. Let's say these are the root cells. Root cells में continuously पानी enter कर रहा है from the soil because of osmosis. ये continuously entry of water into the cell is creating pressure in the root cells. Root pressure. और इस pressure की वजह से पानी and minerals, water and minerals are pushed upwards in the plant towards the stem. So what do we call it? Ascent of sap. Now look at the complete definition of root pressure. Root pressure कहाँ डेवलप होगा? रूट सेल्स में. किस प्रोसेस की वजह से डेवलप होगा? ऑस्मोसिस की वजह से. और ये रूट प्रेशर है, प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है? वाटर एंड मिनरल आर पुश्ड अपवर्ड्स इन द प्लांट. एंड व्हाट इज द टर्म फॉर दैट? असेंट ऑफ सैप. नाउ लुक एट द डेफिनेशन. रूट प्रेशर, pressure in the root cells which is developed due to continuous movement of water molecules through cell to cell osmosis, and this helps in pushing water and mineral upwards. What is the term for that? Ascent of sap. These are the keywords in the definition of root pressure. Now there is an instrument which measures root pressure in plants. The name of the instrument is manometer. Manometer. This is very important from your board perspective. Many times name the following questions have come in your board paper, that name the instrument which measures root pressure in plants. What is the name of the instrument? Manometer. And in manometer there is a liquid metal which is used. Name the your homework question is you have to name the liquid metal which is present in manometer to measure root pressure. So you should know what is root pressure, you should know the name of the instrument, and you should know the name of the metal which is present in manometer. It's the only metal which is present in liquid state at room temperature. This is a hint for you, and very important question. This manometer and root pressure, very important for your board exam. Now coming to the fourth use of turgidity, which states turgor helps in opening and closing of stomata. So what is stomata? This is the diagram of entire stomatal apparatus. So there is a pore in the center, stomatal pore. Stomatal pore is guarded by bean-shaped cells. So ये बीच में there is a pore, stomatal pore. Stomatal pore is guarded by bean-shaped cells. इन bean-shaped cells को क्या कहते हैं? Guard cells. और फिर guard cells is covered by epidermal cells. This entire diagram is of stomatal apparatus. तो पहले क्या है? बीच में पोर है, स्टोमेटल पोर, और स्टोमेटल पोर इज कवर्ड बाय बीन शेप्ड सेल्स. उन बीन शेप्ड सेल्स को क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स. एंड दीज गार्ड सेल्स आर आल्सो कवर्ड बाय एपिडर्मल सेल्स. अब क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं जस्ट बाय लुकिंग एट द डायग्राम, कैन यू गिव मी स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ गार्ड सेल्स? गार्ड सेल्स के स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या हैं विच कैन हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा? तो गार्ड सेल्स का शेप, व्हाट इज द शेप? Bean shape. And the second is the inner wall of guard cell. This inner wall of guard cell is very thick and the outer wall of guard cell is thin. So thin outer wall, thick inner wall. These structural features of guard cell help in opening and closing of stomata. How? We will do both the theories, sugar concentration theory and the potassium ion theory. But before that, this entire diagram comes for drawing in your board paper.
So stomatal apparatus का diagram, what is the pore in the center? Stomatal pore. Stomatal pore is covered by bean shaped cells called guard cells. Guard cell के दो structural feature क्या हैं which can help in opening and closing of pore? Bean shape, and their inner wall is thick and outer wall is thin. Then guard cells are surrounded by epidermal cells. Now coming to the theories of opening and closing of stomata. Now coming to the first theory for opening and closing of stomata, sugar concentration theory. Now these are the guard cells. Guard cells में what are present? Chloroplast are present. Guard cells में what is present? Chloroplast. We have done in photosynthesis chapter, chloroplast के 3 location थे. Guard cell, young green stems, and also in the leaf. Where in the leaf? In the पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स. सो गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो क्लोरोप्लास्ट विल कैरी आउट विच प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस से दे विल मेक ग्लूकोज. सो लॉट ऑफ ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट. सो ग्लूकोज विल एक्ट एज अ सॉल्यूट और अ सॉल्वेंट. ग्लूकोज शुगर है, it will act as solute or solvent? Solute. If solute increases in the guard cell, अगर solute की concentration guard cell में बढ़ रही है because of photosynthesis, so solvent की concentration को क्या होगा? कम होगी. If solute is increasing in the guard cell, solute increasing because of the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस से गार्ड सेल में क्या बन रहा है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं. ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या है? सॉल्यूट है. तो अगर सॉल्यूट बढ़ रहा है तो सॉल्वेंट अपने आप क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा. तो गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. क्लोरोप्लास्ट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से व्हाट इज द प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म्ड? ग्लूकोज. ग्लूकोज विल एक्ट एज अ सॉल्यूट और अ सॉल्वेंट? अ सॉल्यूट. So during the day, solute glucose is more in the guard cell. If solute is more, solvent is less. And water always moves from its high concentration to low concentration. अभी guard cells में solvent की concentration कम है. So water will start moving from outside to inside. Endoosmosis. Guard cells will swell up. Guard cells will swell up because of endoosmosis and the pore in the center will open. Is this clear? I am repeating it once more. तो बीच में एक stomatal pore है, ये guard cells हैं and guard cells are surrounded by epidermal cells. ठीक है. अब क्या होगा? During the day, guard cells will carry out photosynthesis because what is present in guard cells? Chloroplast. सो गार्ड सेल्स दिन में फोटोसिंथेसिस करेंगे क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट है. फोटोसिंथेसिस से दे विल मेक अ लॉट ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज इज शुगर. इट विल एक्ट एज अ सॉल्यूट और सॉल्वेंट? इट विल एक्ट एज सॉल्यूट. तो जब सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन को क्या होगा? कम हो जाएगी, बिकॉज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अब वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू देयर low concentration. अभी so water will start entering into guard cells. Endoosmosis और exoosmosis? Endoosmosis. Endoosmosis की वजह से guard cell क्या करेंगे? They will swell up. These guard cells will swell up. When these guard cells will swell up, the pore in the center, the stomatal pore will open. So this was happening during the day. अब what will happen during the night? Exact opposite of this. रात में विदाउट सनलाइट कैन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस?
Obviously no. So there will be no photosynthesis, no glucose, and what will happen? Water will start moving from inside to outside. What is this called? Exoosmosis. Guard cells को क्या होगा? They will swell up or shrink. Guard cells will shrink. Guard cells will shrink. They will become flaccid. और guard cells के shrink होने की वजह से the pore in the center will close. Is this clear? During the day, photosynthesis हो रही है, so what is being produced? Glucose. अगर solute बढ़े जा रहा है तो solvent कम होगा, endoosmosis होगा, guard cells swell up करेंगे and the pore in the center will open. Night में exact opposite of this, क्योंकि बिना sunlight के कोई photosynthesis नहीं होगी, कोई glucose produce नहीं होगा, तो exoosmosis होगी guard cells में. exoosmosis की वजह से guard cells shrink करेंगे and the pore in the center will close. So this was sugar concentration theory, the old one. Now the new theory for opening and closing of stomata is potassium ion concentration theory. Let's move to the second theory. Now coming to potassium ion concentration theory. So what will happen? This is stomatal pore covered by bean shaped guard cells and guard cells are covered by epidermal cells. अब guard cells में क्या present है? Chloroplast. Chloroplast will carry out which process during the day? Photosynthesis. So these chloroplasts present in the guard cells during the day will carry out photosynthesis. और photosynthesis से you remember in the photosynthesis chapter we have done light dependent and light independent stages. In the light dependent stages there were energy molecules which were being produced, ATP and NADPH. तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं. उन एनर्जी मॉलिक्यूल्स का नाम क्या है? ATP एंड NADPH. सो ड्यूरिंग द डे दिस क्लोरोप्लास्ट विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से ATP और NADPH प्रोड्यूस होंगे. नाउ व्हाट विल दिस ATP डू? नाउ ATP मॉलिक्यूल्स विल एक्टिवली पुल पोटेशियम आयंस इनटू द गार्ड सेल्स. सो potassium ions are actively pulled into the guard cells using energy in the form of ATP. अगर कोई चीज लो concentration से high concentration पे जाती है, we call it active transport. When substances or ions are moving from their low concentration to their high concentration, we call it active transport. और इस low से high movement के लिए energy चाहिए होती है in the form of ATP. So ATP कहाँ से आ रहा है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है. ये एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एक्टिवली पोटेशियम आयंस को गार्ड सेल्स में ले लेते हैं. ना पोटेशियम आयंस, ये सॉल्ट आयंस, ये सब सॉल्यूट की तरह एक्ट करेंगे या सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेंगे? दे विल एक्ट एज सॉल्यूट. सो ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड. What are these ATP molecules doing? They are actively pulling potassium ion into the guard cell. So potassium ions will act as solute. अगर solute की concentration बढ़े जा रही है photosynthesis की वजह से, तो solvent की concentration को क्या होगा? कम हो जाएगी, क्योंकि solute and solvent are inversely proportional. और जैसे ही solvent की concentration कम होगी, पानी कहाँ से कहाँ move करने लगेगा? From its high concentration to its low concentration. Endoosmosis or exoosmosis? Endoosmosis. Guard cells will swell up and the stomatal pore will open. ये सब दिन में हो रहा था ड्यूरिंग द डे. ड्यूरिंग द नाइट एग्जैक्ट ऑपोजिट. नाइट में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है, कोई एटीपी मॉलिक्यूल्स नहीं है, कोई एक्टिवली पुल नहीं कर रहा पोटेशियम आयन को. तो क्या होगा? गार्ड सेल्स में एक्सोओस्मोसिस होगी, सारा पानी बाहर चला जाएगा. गार्ड सेल्स विल श्रिंक, दे विल बिकम फ्लैसिड and the pore in the center, stomatal pore, will close. I'll repeat once again. So there are two theories for opening and closing of stomata. What are the two theories? Sugar concentration theory and potassium ion theory. So sugar concentration is already done. Potassium ion I'll repeat again. ये guard cells हैं. Guard cells में what is present? Chloroplast. Chloroplast during the day in the presence of sunlight कौन सी प्रोसेस करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे. फोटोसिंथेसिस से एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, एटीपी एंड NADPH. अब ये एटीपी को यूज करके गार्ड सेल्स सराउंडिंग सेल से पोटेशियम आयन ले लेंगे बहुत सारा. पोटेशियम आयन विल एक्ट एज सॉल्यूट. अब ड्यूरिंग द डे इतना सारा सॉल्यूट बढ़ गया तो सॉल्वेंट कम हो जाएगा. व्हाट इज सॉल्वेंट? वाटर. सॉल्वेंट कम हो जाएगा.
तो गार्ड सेल्स में अभी सॉल्वेंट कम हो गया है और पानी कैसे मूव करता है, फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. सो वाटर विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू द गार्ड सेल. गार्ड सेल विल स्वेल अप, टर्जिड हो जाएंगे, विल स्वेल अप एंड द पोर इन द सेंटर विल ओपन. ड्यूरिंग द नाइट एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दिस. कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है, कोई एटीपी मॉलिक्यूल नहीं है, कोई पोटेशियम आयन को जबरदस्ती गार्ड सेल्स में नहीं खींच रहा है. तो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस एंडोऑस्मोसिस गार्ड सेल्स में. एक्सोऑस्मोसिस, वाटर विल लीव द गार्ड सेल. गार्ड सेल्स क्या होंगे, श्रिंक होंगे, स्वेल अप होंगे. अगर पानी बाहर जा रहा है तो दे विल श्रिंक, दे विल बिकम फ्लैसिड एंड द पोर इन द सेंटर विल क्लोज. Is this clear? Now moving to the next use of turgidity, also the last one. Now coming to the last use of turgidity, turgor movements. So there are 4 examples of turgor movements given in the textbook. Let's see the first one. Touch me not plant. What is the scientific name of touch me not plant? Mimosa pudica. Now all of you know binomial nomenclature. It was there in 9th standard, your kingdom classification. So what is binomial nomenclature? The first letter of genus should always be capital. तो mimosa का M capital. First letter of species should always be small. So pudica का P small. When handwritten, both the words should be separately underlined. Make sure if you are writing a scientific name in your exam, you are following binomial nomenclature. Follow this nomenclature to write the scientific names. Otherwise, you are going to lose marks. So touch me not plant का scientific नाम क्या है? Mimosa pudica. Mimosa का M capital, pudica का P small. When handwritten, both the words should be separately underlined. अब क्या होता है? Let's look at this diagram. ये लीफ है, इस पार्ट को लीफ ब्लेड कहते हैं. The stalk of the leaf, the stalk with which you hold the leaf, the stalk of the leaf is called petiole. So ये लीफ ब्लेड है, ये लीफ स्टॉक को petiole भी कहते हैं. Now the bulgy area which connects the leaf to the stem is called pulvinus. So you should know the meaning of these words because I'll be using it to explain the turgor movements in touch me not plant. तो इस पार्ट को leaf blade कहते हैं. The stalk of the leaf is called petiole and the bulgy area which connects the leaf to the main stem is called pulvinus. अब touch me not plant में क्या होता है, सबको पता है, छुई मुई. जैसे ही उस प्लांट को टच करते हैं सारी लीफ क्या होती हैं, ऐसे विल्ट कर जाती हैं, ड्रूप डाउन कर जाती हैं, नीचे को झुक जाती हैं. सो विल्टिंग इज ड्रूपिंग डाउन ऑफ लीव्स. तो क्या होता है मिमोसा प्यूडिका में, व्हेन यू टच इट, टच विल एक्ट एज द टच विल एक्ट एज अ स्टिमुलस और एक्सोऑस्मोसिस होगा. वाटर विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द सेल. कौन से सेल में से? सो व्हेन यू टच मिमोसा प्यूडिका, एक्सोऑस्मोसिस स्टार्ट्स इन द सेल्स ऑफ पिटियोल एंड पल्विनस. तो पिटियोल और पल्विनस के सेल्स में एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा, सारा पानी बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से ये लीफ विल ड्रूप डाउन, नीचे विल्ट कर जाएगी. आई विल रिपीट इट. व्हाट हैपेंस इन मिमोसा प्यूडिका, व्हेन यू टच इट, टच करते ही स्टिमुलस मिल गया, एक्सोऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा. कहाँ पे स्टार्ट होगा? पिटियोल और पल्विनस में से सारा पानी बाहर निकल जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा और ये लीफ ब्लेड नीचे झुक जाएगा. दिस इज कॉल्ड विल्टिंग ऑफ लीफ, ड्रूपिंग डाउन. And this is example of turgor movement in Mimosa pudica. There are other examples given. Insectivorous plants भी turgor movements दिखाते हैं. कुछ flowers move towards the sun, वो भी turgor movements दिखाते हैं. So just read all the examples which show turgor movements. Starting with Mimosa pudica, the most important one, scientific name of touch me not plant. This is leaf blade. The stalk is called petiole. The bulgy area which connect the leaf to the main stem is called pulvinus. जैसे ही छुई मुई, जैसे ही we touched it, what happened? Exoosmosis started. कहाँ पे? Petiole और pulvinus में exoosmosis हो गई, सारा पानी बाहर निकल गया and this leaf will wilt. Now, before starting the experiments of absorption by roots, there are very important questions from your board exam and these are the previous year board questions. So there's a diagram, cross section of root given in your textbook. And which question comes from this diagram from your textbook? Arrange them in logical sequence. So they have given cross section of root and how water is entering into the root by osmosis. So water will enter from the soil particles first into root hair. So how water is entering into the root of plants from the soil by osmosis. So पानी कैसे soil से roots में जा रहा है osmosis के through. सारा root के parts दिखाए गए हैं, that how water is moving from the soil to all the parts of the root. And
a very frequently asked question from this diagram is arrange them in logical sequence in section A of your paper. So what's the correct sequence of all the parts of the root of a plant? Soil particles में से water will move into root hair. अब osmosis से, अब root hair से पानी कहाँ जाएगा next? Epidermis. So root hair के बाद what is the next part of root? Epidermis. Next part of root? Cortex. So water will move from soil particles to root hair to epidermis, epidermis to cortex, cortex to endodermis, endodermis से pericycle से phloem, and the last one is xylem. This is how water moves in the roots starting from the soil particles. Soil particles से water will enter into root hair by osmosis. So root hair, epidermis, cortex, endodermis. Endodermis के बाद pericycle, phloem, and the last one is xylem. So please make a star in your textbook. This is very important. And one application based question given in a box in your textbook. So we will know the keywords for this question. So what does the question say? Soaked seeds when kept in fully filled closed container burst it open with great pressure. तो एक कंटेनर लिया, क्लोज्ड कंटेनर, उसमें सीड्स सोक कर दिए, कुछ सीड्स पानी में डाल दिए एक क्लोज्ड कंटेनर में, उसको ओवरनाइट छोड़ दिया. बोल रहे हैं कि द कंटेनर बर्स्ट ओपन्स विद ग्रेट प्रेशर, और एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों हुआ. सो व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड? अब क्या है, दिस इज द क्लोज्ड कंटेनर, देयर इज वाटर इनसाइड इट एंड सम सीड्स आर देयर फॉर सोकिंग. And when you leave the jar overnight, what will happen? In the morning you will see that the lid is open. So lid burst open with great pressure. Why? The question is why. सबसे पहले seeds में क्या होगा? You remember imbibition? Seeds are plant cells, right? Water is attracted to the surface because they have hydrophilic substances. सबसे पहले imbibition होगा. Water molecules are attracted to the surface of the seeds. फिर water will start entering into the seed, endoosmosis, और इस continuous entry of water into the seed will create कौन सा pressure? Turgor pressure. Seeds will expand, seeds will stretch and will generate which pressure? Turgor pressure. And because of this turgor pressure, the lid will burst open. So what are the three keywords? क्या हुआ? Seeds में सबसे पहले imbibition start होगी, water will start attracting to the surface. फिर imbibition will be followed by endoosmosis. Water will start entering into the seed. अब endoosmosis की वजह से क्या होगा? Seeds will become stretched. They will expand, stretch, and which pressure is generated inside them? Turgor pressure. और इस turgor pressure की वजह से the lid will burst open. So the three keywords are imbibition, endoosmosis, and turgor pressure. They can change the question, but the concept remains the same. What will be the three keywords? Imbibition, endoosmosis, and turgor. Imbibition, endoosmosis, and turgor pressure. While writing the answer, make sure these three keywords are there in your answer. Now moving to the experiments of absorption by root.